Uh, yes, Sadhna, we cannot. So Shushmita is there. Yes, please come up. You have any queries? You have any questions, Sadhna? I don't know. I could not recognize you, please. So you can introduce yourself, or you can ask the questions directly. Bhim BDR. Yes. You're from Nepal or from India? Sadhna. Bhim BDR. If you have problem with audio, you can chat it down, your questions, your queries. I'm not able to hear you. Your voice is too low. Sadhna, am I audible to you? Bhim, Vidya, am I audible? Pushpa. Umesh, am I audible? Shushmita? Sir. Yes, please, Pushpa. So this way it won't be possible if nobody is speaking. I'm here, sir. Susmita is present. Okay. Because Bhim, Sadhna, they are new. So, Mr. Bhim, you are from Nepal or India? Gagan Bhatta. Pushpa. Nepal. Okay. Have any queries, questions? Bhim, Mr. Bhim, who shared you the link? Is it Shita or Umesh? Yes, sir. Who shared the link with him? You can ask in your language. If they are not able to understand me, you can talk to them in your language, and then we can move further. Okay, sir. सरलाई के सोध्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। Gagan Bhatta.
Okay, then let me tell you, all of you, if you are all from Nepal. So very shortly we are opening institutes in Nepal. So very near to you, you will be able to send your children to learn Vedic mathematics. If you are a teacher, we have teacher training programs. For that, you can contact with Mr. Umesh or Shushmita Singh. So they'll be responsible in Nepal for all these Vedic mathematics classes. And then we'll be having competitive exams also. We'll be having competitions for Vedic mathematics. Right. So very shortly, we are announcing summer camps for Vedic mathematics. So any of you who is teacher or having kids above age of 8 years, they can contact with them. We'll be starting with the batches very soon. Yes, Sarah, you are from? Sarah, am I audible to you? Pushpa, Gagan? Yes, I am listening, आपका sir. नेट स्लो See, Gagan, if everybody is listening, then who will be asking the questions? So if you have any doubt, if you have any questions, if you have any queries regarding Vedic mathematics, I'm here to solve. Yesterday we had a seminar. We had a seminar in Ataria, if you were there. And very shortly we'll be having more such seminars, such workshops in Nepal. But still, this particular episode is regarding your questions, your doubts, your inquiries regarding Vedic mathematics. So if you have any doubt, any questions, you can ask me now. Sarah, am I audible? एडिंग मल्टीप्लाई Sarah, am I audible? I think there is a network issue or something. Nobody is able to communicate today. माय नेट इज टू स्लो Umesh, you can talk to them in your language. I can just tell you that Vedic mathematics is what makes your maths magical. It makes your maths faster. It makes your calculation faster, and moreover activates your brain. Right? That is what is required for the children. But still, I want to hear from your side. What are your doubts? What are your inquiries? What are your questions? So, Shushmita, you attended a seminar yesterday. Now, do you have any doubts? एस सर Please ask. मल्टीप्लाई What multiply? वैदिक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मल्टीप्लाई आपने कितने डिजिट्स को करना? देखिए, मल्टीप्लिकेशन की जो बात है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ बहुत से रूल्स हैं. रूल्स का मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स with which you can solve the questions. So basically there are general techniques also, and there are specific techniques. Now by general technique, I would say which can be applied to every number. And when I talk about specific technique, that would be applied to certain numbers. Okay, I'll give you one example.
Okay, sir. Yeah, we have some person Vedic. Who is this? Yes, do you have any query, Vedic? Okay, so let me tell you, like, for example, I'll take any two-digit number. Let's say we have to calculate 18 into 16. Right, now this is a two-digit number. Yes, sir. Now, first I'll deal with the general category. Now, this particular type is known as Urdhva Sutra multiplication. Urdhva, URDHVA, Sutra multiplication. In simple language, all those who cannot remember the sutra name, in the simple language, this is known as crisscross multiplication. Now, if it is a two-digit number, we will have 3 steps. How do we say, calculate how many steps? There are 2 digits here, 2 digits here. Total number of digits are 4. So every time we subtract 1 digit, and that means 3. If it would have been 3 digit by 3 digit number, for example, if the digit was 182, 163, then we would have 5 steps. Yes, Umesh. No, we. Okay. Sir. Yes, Sir, Mr. Nar Bahadur Bika wants to join there. So I think, is there any request? No. All I have covered. Okay. There is nobody pending. Okay. He wants to join, but he is unable to do so. I will try to help him. No issues. Okay. Yes, Santosh Kumar, you are from? Okay, so let's come to the topic. Vedic, I am not able to hear from you. Vedic, what's your name? Your name is Vedic. Okay. Yes, Sushmita, I'm going to answer your topic first. Yes, sir. So now this is a general technique. In general technique, we have we'll be having 3 steps. Now the first step, okay, let me go to a special separate page. 18 into 26 was a number. To explain, you will be needing 3 steps. First step. Now, whenever we do maths, we go from right to left. But in this particular content, we'll always try to go from left to right. And why? That I explained yesterday also, that we are better. We perform better. We perform faster when we are going from left to right. Now, there are 3 steps. First step is, we call it as left multiplication. Now, why do we call it as left multiplication? Because this number is also on the left, this number is also on the left. So we multiply 1 with 2. This 1 and this 2 are multiplied. So what is 1 into 2? Sushmita, what is 1 into 2? So this is 2. Second step, we multiply, cross multiply. I told you this name, the name of this particular method is crisscross multiplication. So at second step, we cross multiply. So 18 and 26, we will cross multiply.
and add. So 1 into 6 is 6. 8 into 2 is 16. So 16 plus 6 is? Yes, Sushmita? What is 16 plus 6? 22. 46. So we'll just have a balancing line. We'll write 22. Then third step. Now third step is right multiplication. So 8 into 6 is 48. So I write 48. So this is your answer. But yes, Yes, sir. this is not the final answer. Why? Because we have 2 digits at unit place, 2 digits at tens place, which is not advisable, which is not possible. So what do? We will keep 1 digit here. This 4 goes here, and this becomes 6. This 2 goes further, and this becomes 4. So the answer is 468. So any big number comes. This method is known as crisscross multiplication, and it is a general technique to find any answer. Now, sometimes very interesting things come. Like we are just talking about 2 digits number today. So let me give you 3 specific techniques. Now let this particular specific technique is, for example, 12 into 18. One more question over here is 44 into 46. Yes, do you find anything common in them, or anything specific in them, or anything what you feel there is something common in these numbers? Yes, Sushmita, Vedic, Sadrai, Umesh, anyone? Santosh, Sara. See, if you have some queries, you have to ask yourself. I cannot read your brains. I cannot read your mind, what doubts you have. So you have to come up for that. No one doubts. Yes, Santosh, Sara, Vedic. Okay. Now, yes, anybody who could understand anything? So we have a senior teacher with him now. He's Mr. Nar Bahadur from Koti, Nepal. Both Mr. Nar Bahadur and Umesh, their signals are low. Sir, I am trying to connect him. He was in the. I am helping him. Yes, he was in Sir. the batch, but I think he's doing it from mobile, so he has to press connect to audio. Sir, do connect to audio, call over internet, join internet. Yes, now I think he is okay. Still connecting. Yes, Sarah, you have any questions? See, this particular session is just to solve your queries, your doubts, your questions. So if you don't have any doubts, definitely I will not be able to help you out. Sadhna, you're not answering. If you're not interested, you can leave. Sorry, but no use of Vedic. Yes, if you have any audio problem, you can chat down.
Anyone who has audio or video problem, they can chat down. But if you are not, yes, Vedic, I'm not able to see you clearly. You have any questions? Please switch on your light wherever you are sitting. Okay, Vedic, Sadhna is, are you having any questions or anything? Any doubts? Is he there, sir? No, yes, he's there now. Welcome, sir. Okay. Yes. Okay, I was just explaining some specific cases of multiplication. Now this is, please just pay attention. I have written two questions. One is 12 into 18 and another is 44 into 46. Do you find anything common, uncommon, anything different in these two numbers? Yes, anything? Yes, sir. Okay. Let me tell you. Now, what is this? What is different? What is common or uncommon? If you see the unit place, these unit place, they are adding to become 10. Both. And the tens place, they are common. Both have 1 or both have 4. Whenever such cases are there, this is known as Antya Yor Dashake Sutra. And now you can mentally solve these questions. See, if you try, you cannot solve this question mentally because you have a habit of solving one by one. But if you understand that, yes, this is Antradoshke Sutra, it is very easy. We just have to calculate. We just have to understand that there will be two parts of the question. The first part would be right multiplication. So 6 into 4 is 24. On the left hand side, because the numbers are common, so again, I'll multiply the common number with one more. So that is 5. So the answer becomes 2024. Similarly, on this side, 1 into 2 and 16. So 216 is the answer. So yesterday also we had the same topic. Our brain. See, everything depends on visual ability. Visual ability means we are trying to concentrate more and more on numbers. Then only we'll be able to solve mentally. So the same question was there. And how we could do it? Because we had the unit place numbers adding to make 10. And the tens place was common. I'll give you more examples on this. 97, 93. Again, 7 and 3 are adding up to form 10. So 21. Multiply those. 9 and 9 are common. So 9 into 10 is 90. So now you can solve this question mentally. 45 into 45. So that gives 25 and 20.
Yes, Umesh, is it clear? Any doubts? Lokraj Clear, Upadhyay. sir. Who is this Lokraj Upadhyay? Yes, you are from? I am from Nepal, sir. Okay. Do you have any questions? Any query Sir, regarding basic mathematics? yesterday I couldn't take your complete classes. So I am trying to understand now. Now, this was a topic. This was a question somebody asked, but now she is not in the class. You Yesterday can I couldn't take class. you can ask your questions. You can ask your queries. Okay, sir. Okay. So what doubts? Sir, I mean, from which age of the child can study Vedic mathematics? See, if you go for logically, the child should be 8 years. That means Yeah, 8 class years. 3rd. Okay, sir. Why I'm saying this? Because a child should know single digit addition Yeah. and tables up till 8. So only these two things are required. But what happens? Sometimes some parents, they think, or schools, they think that yes, our children could do also. So then they start from class 1 also. It is possible. If you want, Okay, I sir. can share you a video of class 1 students. When the workshop was started, they said they don't know the tables. They know tables up till 4, 5, 10, and maximum 12. But when Yeah. after 1 hour, everyone was able to write tables up till 89. So see, Yeah. what is different? What makes them write? They get the confidence, they get the easier concepts, and that is what is required. Okay. Okay, sir. Which Probably you are textbook from? also have been Yes, textbook also have been produced by you, I think, from that yes, table. I'm an author. I have written 6 books. Also now our books are coming class wise. Class 3rd, 4th, 5th is for class 3rd, 4th, 5th we have 2 books. For 6th, 7th, 8th we have 4 books, which can be Okay, sir. completed in a year. Yes. So you are from When basically you which contact, place? yes, sir. You are from which city? Voice is not clear, sir. You are from which place? Which city? Attariya, sir. Attariya, ours is Attariya. Dhangadi, Attariya. Yeah, Okay. Attariya, Dhangadi. That is the nearest city for me. Okay. So you can get in touch with Mr. Umesh, and he'll guide you, because on Saturday and Sunday we have a workshop. Still, if Where, you sir? have Saturday and Where Sunday, is? we have an online workshop. Where is, sir? Online workshop, sir. Online. Zoom. Okay, online. Yeah. Right. Yes. It is from 2 to Indian time 2 p.m. to 4:35. So you can say 2 to 5 p.m. Indian time on 2 to Saturday 5. and 2 to 5 Sunday. 2 to 5. Okay, excuse me, sir. Yes. Lokraj sir, please connect with me. Lokraj sir, Yes, sir. please connect with me in the social media. I think you are there. Okay, I'm sharing the number, my WhatsApp number or WhatsApp number in your chat box. So please contact with me. Okay, thank you, sir. I will contact you. Okay, if you share, I will contact you. Okay, sir. Thank you. Yes. Okay. Yes, Mr. Vedic. Your name is Vedic or what? Yes, sir. Nar Bahadur, sir. Did you understand this concept? हजुर सर हेलो सरले सम्झाउनु भएको सम्झिनु भयो कि भएन भन्नु भएको सर ए राम्रो बुझ्यो सर ठिकै थियो Sir, he is understanding. Okay, very good. So similarly, one more 73, 77. Again, see 7 is common, but
only condition of this Antre or Doshke is that it should have unit place adding up to 10 or powers of 10. See, we'll understand big numbers also. It's not only for 10. We'll understand big numbers also. And the tens place should be common. Then only this sutra is applicable. So 7 into 8 is 56 and 21. See how easily we can calculate these mentally. Right? I'll give you one more example. 105, 105. Now again, see, 10 is common, 10 is common. 5 is 5 plus 5 is making 10. So 25, 110. Got it? Yes, Umesh, is it clear? Yes, sir. Okay. Now on the similar pattern, if the two numbers are adding up to make 100, see now, 125 into 175. How big numbers? Now can you calculate this mentally? Not possible. But I'll reduce the strength. How? If you just observe, now 25 and 75, they are adding up to form 100. And now 1 is common. So again, 1 into 2 on one side and 25 into 75 on the other side. Right? This is how Yes, sir. you will approach. This is again the same Anterior Doshke, but the difference is now you are having it, it is known as Anterior Doshke 100 multiplication. Right? So what is 25 into 75? That is 1875. Correct? And 2 here, so it becomes 21875. One more example. Sir. Yes. Could you please explain, sir? Could you please explain me 25 into 75, because I was lost there due to I am Okay. I am Now- coordinating now- with. Now 25 into 75, this can be solved by general technique. Okay. That is known as crisscross multiplication. Okay, crisscross. So first we'll see when we'll be training you. So first topic will be dealing with general techniques of multiplication. Now 25 into 75, we can have 3 steps. First step is left multiplication. So left means 2 into 7. 1 4 14. So it will have 14. Second step would be cross multiplication. So cross multiplication is 2 into 5 plus 7 into 5. 7 into 5. So 5, 10 plus 45. 25 is 45. huh? 7 5 35 plus 10 Oh. 45. Okay, 35 plus 10. 25. Third 25. step is right multiplication. So that gives Okay. 25. 25. Now, the same rule you have to remember. I told you yesterday also, balancing is very important. So if you balance this, what is this? 1875. 1875. Okay. Now, Nice. now what happened? See, 125 into 175, you could have calculated in the long way also. But on applying this Anterior Doshke formula, your calculation has been reduced. Sir. Hmm. Sir. Hmm. Okay. We can calculate the 4 by 4 matrix like this way. Yes. Am I right, sir? Yes. Okay. Should I solve? First, let me solve 3 by 3, then 4 by 4. Yeah. Give me any number of 3 by 3. 3 by 3. 1 2 3 into 3 to 1. Okay. Perfect. Now, first thing you Yeah. need to understand how many steps will come. To understand that, how many digits are there on top? 3. 3 plus 3 3. total digits are 6. 6. So always one less than this is the steps. Okay. 5 steps.
Okay. Earlier it was 2 plus 2. So it was 4 minus 1, 3 steps. Correct? Okay. Yes, sir. Now first step. First step is 1 into 3. That becomes 3. 3. Second step. I'll change the colors so that you can understand. 1 into 2 Okay. is 2. Plus 3 into 2 is 2. 6. So what? 6. Okay. 6 plus 2 is? 8. Very good. Third. Now from 2 here. to 4. 4. Now let me tell you. Okay. Okay. Now see, first you took only first numbers, then you took 4 numbers. Now you will take Okay. all these numbers. So first this and this. So 1 into 1 is 1. 3 into 3 is 9. And this is also inside. This is 4. So 9 plus 1 plus 4 is 14. Did you understand this step? Yes, sir. Got it? Okay. Now start decreasing. That means now we will not consider the first digits. We'll take only these. This and this. So 2 into 1 is 2 plus 6, 8. And last is again 3. 3. So the answer becomes 3, 9, 4, 8. Now is it clear? So try to understand how many carryovers will go off. Okay, sir. I understood. But there is a one doubt. When we get a 14, when you get 14, there is a anything that we can help. So you can. See, this is happening. What Na? is happening there? 4 will remain as it is. 1 is going. नहीं, That's why नहीं, this नहीं, is 9. उसका नहीं था सर, उसका नहीं था, उसका नहीं था. हाँ, बोलिए बोलिए. जो हम 1 into 1 और 3 into 3 और प्लस 2 into 2 कर रहे हैं ना जी. उसमें जो जैसा 3a square b और 3ab टाइप का कुछ है इसमें, क्या है ये? नहीं, अगर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे वो नहीं है. बट इससे करने से अलजेब्रा किया हुआ है. इससे अलजेब्रा सॉल्व करके दिखाऊं जी. आप अच्छा चलिए, अलजेब्रा अगर आपने किया है इसका बेनिफिट उठाते हैं. लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन of algebra. 2x square plus x plus 5 3x square plus 2x plus 6. करेक्ट? अगर इसको आप नॉर्मल मैथ से सॉल्व करते हैं, यस सर नर बहादुर सर, तो आप ऐसे करते हैं 2x square then 3x square plus 2x plus 6 plus x into all this again plus 5 into all this again. Correct? Yes sir. Yes sir. उसके बाद सबको खोलते जाएंगे, एक स्टेप हो जाएगा, फिर इकट्ठा करेंगे, चौथा स्टेप हो जाएगा, फाइनली 5 स्टेप्स में आप ये सॉल्व करते हैं. करेक्ट? Yes sir. Now let me show you a very single step answer without any confusion. Now this is 2x square. 2x square x 5. As it is लिख लिया, सिर्फ प्लस का साइन नहीं डाला क्योंकि इट इज अ प्लस. नेगेटिव होता तो नेगेटिव डाल सकते थे आप. 3x square 2x 6. Apply the same Urdhva Sutra. First is x4. I am keeping a balancing line right now. आपको आंसर सिंपली वही मिल गया, कोई आपको बाद में उसको सेग्रीगेट नहीं करना. What is 2x square into 2x? 4x cube plus 3x cube. So what is that? 7x cube.
7x cube. Any Okay. doubt? Any doubt? No. Okay. No. Now let's come to this. 12 plus 15, 27. 15 plus 12 is Plus 27 2, plus 2. 29. 29x squared. Very good. Now, last 6. 6 plus 10 कितना हुआ? 16x. 16. And the last 30. is 30. 40. आप यहाँ पे आंसर की जो आपकी जैसे कहते हैं ना सिली मिस्टेक्स, जो Yes, sir. एरर्स होते थे, गॉन. आपको ये आंसर सिंगल लाइन में आ गया. जो आंसर जी. आप 5 स्टेप्स में करते थे, और 5 स्टेप्स में करने के कारण क्या होता था, देयर वाज ऑलवेज अ कंफ्यूजन एज वेल एज सिली मिस्टेक्स, बिकॉज 2x² into 3 6x² हो गया. उसके बाद 2 into 2 4x³ लिखते थे हम. फिर नेक्स्ट टाइम प्लस 3x² आता था, फिर थर्ड टाइम आता था. सो सबको ऐड करते थे आप. Are you getting my point? Yes, sir. Now see how easy it is. How nice. How easy it is. And algebra is the most tough for students. Sir, in engineering subject, there is I think some numerical method. There is some methods here from here. Again, Yes, the sir. point is you need to see everywhere. The basic calculations will remain same. This is what we do in solving numericals. Yeah. This is all we solve. Yeah, we solved here. It But is नाम simple. नहीं था, किसी और का नाम था इसमें, किसी और का नाम था कि कौन सा सूत्र, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला न्यूटन्स फॉर्मूला? नहीं, this is we are doing with Urdhva Sutra only, na? We are applying Okay. Urdhva. Okay, there is a Gauss theorem, others it is. वो आप मुझे बताएंगे तो मैं वो कर दूंगा. Yes, any other point you want? Anyone has any other question? Yes, Nar Bahadur sir, आप बताएं. You tell me. ये ठीक है सर, छोटा तरीका निकाला एकदम. सर देखिए, हमें कंफ्यूजन को दूर करना है. जब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा. पहले अंडरस्टैंड हमें ये करना है कि वी हैव टू मेक द एजुकेशन इंटरेस्टिंग. और मैंने अपना ही एग्जांपल दिया कि आई वाज अ इंजीनियर, आई वाज हैंडलिंग द स्कूल्स. व्हाई आई एंटर्ड दिस फील्ड, व्हाई देयर इज अ स्ट्रेस ऑफ मैथमेटिक्स, एंड कैन वी डू समथिंग टू रिमूव दैट स्ट्रेस? एंड आई फाउंड द आंसर. सर, जिंदगी में जब आप किसी का भला करते हैं ना, किसी के लिए सोचते हैं, कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो जो खुशी मिलती है ना, आप ये देखिए, मैं मॉर्निंग में नेपाल से निकला हूँ, शाम को पहुंचा हूँ, अभी भी क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग है ये. अभी तक मुंह भी नहीं धोया हुआ. तो क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग इतना है, राइट? ये बात है. तो बहुत छोटा तरीका निकला सर, तो 5 स्टेप. और सर कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको बार बार ऐड नहीं करना है. माइनस तो रखना ही पड़ेगा सर ना? नहीं, अगर सर ये प्लस है, एक माइनस का कर लेते हैं, इसी को माइनस कर देते हैं. इसी को माइनस कर देते हैं. मुझे 1 मिनट का टाइम.
8। बोलिए क्या चेंजेस करें हम? यहाँ पे माइनस कर दें? माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस और 2x के आगे भी माइनस यहाँ पे कर दें, है ना? दिया। यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया। एनी डाउट? उमेश, ट्राई टू सॉल्व नाउ प्लीज। Okay. 4 आप 2 to कोशिश the करिए, 4. गलती होगा तभी। देखो मेरा एक असूल है, गलती हम करेंगे तभी तो करेक्शन करेंगे, अगर गलती ही नहीं करेंगे तो Okay. करेक्शन कहाँ से करेंगे? Okay. Let me speak. Okay. Let me try, sir. Okay. 2 to the 4 minus 3 x square x cube minus x cube. हम्म, Okay. Could you please write? okay, I'll write. Give me 1 second. मेरा को so first is same 6x4, correct sir? Yes, sir. Yeah. X power 4 minus plus oh sorry 2 to the 4 minus 3 x cube Very x good, cube. very good sir. Okay. फिर 2 to the 4. Sir 2 to the 4 नहीं, ये Oh, sorry, outside. sorry. 2 6 that 12 minus 12 plus 15. ये ले लीजिए, ऐसे लिख लेते हैं। Okay. Minus और 12 minus plus 15 minus 2. so हो गया plus x 1 रह गया। plus x. X slash सर x x square. क्या Okay. है? S square. Okay. और 6x plus 10. 6 plus 10 16. और minus 30. हो गया, खत्म। और अब आप बैलेंसिंग लाइन को हटा के उसकी जगह प्लस यूज कर लीजिए, जी। क्योंकि ये अल्टीमेटली ये तो एक आपकी बैलेंसिंग या उसके लिए है। ये लीजिए, रिमूव किया और यहाँ पे प्लस का साइन डाल दीजिए। ये बड़ा चंगा है जी, इसमें कोई वो नंबर को आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है सर अपने आप सॉर्टिंग हो गया, बस सिर्फ एक ध्यान रखना है। लेट मी टेल यू दैट आल्सो। ध्यान कहाँ रखना है? सपोज मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 8। नाउ वी हैव टू डू, एक तो हमें अरेंजिंग ऑर्डर हमेशा सेम रखना है, मींस इट शुड बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। सो पहले x स्क्वायर ही आएगा, ओके 5x ही आएगा। अगर यहाँ पहले 8 लिखा होता तो भी आपको चेंज करना पड़ता। ओके चलो मैंने प्लस का साइन डाल दिया। अब 2x स्क्वायर तो इसके नीचे आ गया, x की वैल्यू यहाँ है ही नहीं। ओके 0x ओके। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ मतलब 4x पावर जो नॉर्मल मेथड में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर है या नहीं है, बट हियर यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स। वन इज अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। सेकेंड, फिल द मिसिंग टर्म्स। जैसे अभी हमने फिल कर दिया ना, 0 है तो 0 कर दो। जी जी जी। Sir, is this possible to write 8 plus 5x plus x square from? Is this possible? नहीं, दोनों को उल्टे कर दिए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। क्वेश्चन अगर सपोज क्वेश्चन ही ऐसे आ गया, x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5x। ओके डिक्रीजिंग ऑर्डर, पर आपको उसको अरेंजिंग ऑर्डर करना ही पड़ेगा। ओके You that have is the to basic arrange step. the Okay. order of decreasing, otherwise your answer will never be correct. So that's why I wrote that these are the two things you have to follow. Okay.
Yes, Fill the missing element. Lokraj, did you understand this thing? Sir, I couldn't understand. Okay, what do you It has do? been a bit. क्या It करते has हैं been. आप? It has been a bit hard. It has been a bit hard for me. No issues. What do you do as? Yes, sir. What do you do? आप क्या करते हैं? Actually, I am an English teacher. Then it is hard for you. This comes at the third step. So that workshop, when you'll attend the workshop, that would be a first step for you. So just be in touch Okay, with Umesh, and then you can have a workshop this Saturday, Sunday. Then you will not say this is tough, because after 6 hours you will be ready for that. Everything, Yes, sir. Okay, sir. right? Okay. Any further Okay. questions? Okay, Yes, it's good, sir. Okay, sir. It's fine for me. I understood that. So thank you. And every You time have we'll been. have one concept, new concept. Every time we'll talk, right? So that people who are attending, they can also understand. They can also get some knowledge of new steps every time. सर उसका क्या ये वाला नंबर का क्या है 97 into 98 वो उसका था ना वो प्लस 100 में मिला हुआ 98 और 97, करेक्ट? 97 हाँ इसमें एक टर्म होती है बेस। सी एक तो इसको क्रिस क्रॉस से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट क्रिस क्रॉस से ये मेंटली नहीं है। तो इसका जो एक जनरल टेक्निक होती है उसे कहते हैं निखिलम सूत्रा। निखिलम सूत्रा मीन्स आप बेस से कितना कम है। ये 100 से 2 कम है तो -2, ये 100 से -3 कम है। यहाँ पे 2 into 0 6 आ गया। ये 97 into 2 9506 is the answer. Sir, it is only for near to 100 like this. No, if near to if 1000, near to lakh, near to 10 lakh, any number. Okay, but I understood this. ये थोड़ा सा समझने के लिए देखो, मेरी बात सुनो। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि नियर टू 100 ही चलेगा, नियर टू 20 भी चलेगा, 30 भी चलेगा, 40 भी चलेगा, 50 भी चलेगा। बट इसके लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप जब क्लियर हो जाएगा ना, तब ये जब टॉपिक करोगे तो समझ आएगा। एंड विल बी स्टार्टिंग द बैच दिस वीक, सो आई होप यू शुड अटेंड द बैच। बैच करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना? अगर तो उसके बाद होता चला जाएगा ये। Okay, just if we try to 72 or 75. देखिए इसको कहते हैं सब बेस। 70 is the sub base is 70. Okay. तो अगर सब बेस 70 है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 77 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 77 into 7 is, बोलिए क्या होता है? ये तो लंबा रास्ता, ये तो लंबा कैसे हो गया? 77 into 7 is लंबा। 49 into 11. 53910 is your answer. Sorry, not 5310, because इसमें एक पॉइंट मेरे को आपको समझाना है कि ये 70 है तो ये एक इधर जाएगा, तो ये 5400 हो जाएगा। Okay, 7 into 78. नहीं, आप नहीं अभी समझ पा रहे, थोड़ा मुझे टाइम दो उसके लिए। आपको ओके आप तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा सर अभी एक और क्वेश्चन पूछा आपने। मेरा क्वेश्चन वही था 7 into 77 7 into 77 नहीं सर, उसका जो आंसर था ना 7 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, 7 से इसलिए किया क्योंकि here we are using sub base। ओके इसलिए अगर ये 62 into 65 होता है तो हम 60 करते। यस। अब मैं इसका मैं अभी देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज क्वेश्चन है 79 into 76, परफेक्ट। ओके अब ये चार तरह से कर सकते हैं हम क्वेश्चन। ओके वैदिक मैथ्स का यही मजा है। अगर मैं इसको 100 बेस लूं तो इसका मतलब -21 -24, ये तो लंबा बढ़ जाएगा।
नहीं, ये लंबा नहीं पड़ेगा। जिसको जिसको वैदिक मैथ्स का स्कॉलर बनना है वो क्या करेगा, वो उसको करना है, उसके लिए ये लंबा नहीं है ना। इसीलिए मैंने कहा जब बच्चे करेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। पर मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंट मेथड्स। 504 व्हाट इज 76 minus 21? 76 minus 21 55. ओके, नाउ यहाँ पे हम 3 डिजिट्स नहीं रख सकते, 2 ही रखेंगे क्योंकि 2 जीरो हैं। हाँ। ये चीजें आपको समझनी है अभी। तो यहाँ 5 गया जी। तो आंसर आएगा 6004। करेक्ट। या और समझिए, अब मैं बेस 80 रखता हूँ, सब बेस जिसे कहते हैं आप। 79 76 -1 -4 -1 -4 हो गया 4, और 76 में से 1 गया 75 into 8 is, बोलिए, 600। हाँ। तो इसका आंसर ये देखिए डायरेक्ट 6004 आ गया। वाओ। अच्छा, अभी तीसरा देखिए। अगर हाँ आप कहते हैं 70, सी पेपर जब सॉल्व करना है तो आपको तीनों मेथड पूछ सकता है वो, कि विद सब बेस 70, विद सब बेस 80, विद सब बेस 100। और सर मेरा थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जैसे हम 96 97 कर रहे थे ना, 96 96 7 कर रहे थे, वहां पे 02 03 कर रहे थे। पर यहाँ पे 79 76 कर रहे हैं, यहाँ 14 कर रहे हैं, 04 नहीं किए यहाँ पे। और यहाँ उस पे इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, 100 में 2 0 है। ओके, हाँ, नाइस, ठीक है। अब देखिए एक बार ये देख लीजिए फिर। 79 76 यहाँ 9 into 6 हो जाएगा। अगेन 9 into 6 is 54, बट 5 इधर ही जाएगा। 76 plus 9 is 85। यहाँ 85 into multiply by 7 हो जाएगा। 7 हाँ। What is it is 595 54। एक इधर गया, अगेन 6004। एक क्वेश्चन तीन तरह से हो गया। हाँ। अच्छा, ये फर्स्ट टेक्निक होती है। आप जैसे जो नंबर बोल रहे हैं, अब 79 76 को उससे भी कर सकते हैं, ऊर्ध्वा सूत्र से। 49 63 plus 42 और 54। So what is this? 54 5 105 49 49। एक ही डिजिट रहेगा यहाँ। 110 0, 110 का मतलब है 11 यहाँ चला गया। कितना आया? हाँ। 4 मेथड दे दिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन जी। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, आ जाएंगे ये सब कुछ। ठीक है जी सर, ठीक है सर। राइट। तो यस सर। सर एक बार पूछ लेते हैं, हमारे वो सर है वहाँ पे। सर बोल नहीं कैसा लग रहा है? मैं तो पूछ रहा हूँ सर से ही। सर कैसा लग रहा है आपको? कोई नहीं है और सर हम है। हाँ, हम तीनों हैं। कोई हमको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर इसके लिए। सर कोई एक बात बताओ, अगर किसी का भला हो जाए इसके बाद। मैंने कल भी समझाया, देखिए दिमाग, आपने मैथ्स पढ़ाया है, ठीक है, छोटी सी बात, मैथ्स से डरता ही क्यों है बच्चा? हमने अगर उसका डर निकाल दिया तो कितना खुश होगा। हमें डर निकालना है सर, फर्क देखना, उसके बाद कॉन्फिडेंस में। और आपके अंदर एक चीज आ जाए कि मैं कर सकता हूं, तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको किसी चीज के लिए नहीं रोक सकती ना। नहीं, कर तो सकते हैं सर। अली आपको भी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा हमको। सर मैं करूंगा। आप इस बार वर्कशॉप अटेंड करें, आपको बहुत कुछ आ जाएगा। जो कल हमने किया, फर्क होता है। ऑनलाइन में आप कंसंट्रेट करेंगे, वहां कंसंट्रेशन नहीं थी, वहां श्योर हो रहा था। जब आप अपने सामने सिर्फ करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए वर्कशॉप में सिर्फ 20 बच्चे हों,
आप उनके एक एक टेबल पे जाके देखें कि वो कितना कर रहे हैं, वो 20 के 20 पूछें क्वेश्चन, तो कभी भी अब 180 लोगों में आप सोचें कि उनको सबको आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है। जी हाँ। ठीक है ना? ठीक है उमेश जी, मेरे फिर क्लास है एक। ठीक है, सी यू सर, गुड हाँ नाइट, मैं वो रात को बनवा दूंगा, हम करते हैं उस बारे में। सी यू सर। ओके थैंक यू। आपका रह गया वीडियो। हाँ मेरा आपका अच्छा मेरा खुद का भी बताना है। बिल्कुल, आप भी तो टीचर हो। अच्छा सर का प्रिंसिपल है या टीचर है? सर है टीचर, वो उनका वो मैं बोल टीचर रहे हूँ थे सर। ना ठीक है, मैंने 42 ईयर्स से, ठीक है, वो 42 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स। थैंक यू। चलिए ओके जी, थैंक यू सर, सी यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड थैंक यू नाइट। सर, थैंक यू सर। आप साथ रहें, सब हो जाएगा सर, क्यों चिंता करते हैं। जी हाँ जी हाँ। आप मैं सबको थोड़ा सिखाऊंगा, बाद में तो आप जैसे लोग ही सिखाएंगे, मेरे को तो एक बार ट्रेन करना है आपको। ठीक है चलिए। आप जी हाँ जी हाँ। सर आप बोल रहे थे ना मेरे को मैथमेटिक्स का टीचर चाहिए जो ट्रेन कर सकता है, उसको ट्रेन करूंगा बोल रहे थे ना मैंने बोल तो आप दिया खुद। मैंने आपसे पूछा, आप मैंने बोला ना अभी क्या बोला मैंने? अभी मैंने क्या बोला? 40 कि हाँ मैंने वही बोले अभी मैंने क्या बोला कि मैं वही इतना सर पढ़ाना है, बाद में आप ही ने पढ़ाना है। मैंने आपसे पूछ के तो मैंने बिना पूछे बता दिया ना, बोल दिया। ठीक है? सर 42 इयर्स मैथ पढ़ा चुके हुए जो है उनको कहाँ मिलेंगे, वो तो रेयर पीस है सर। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी तो यही वर्ड बोला कि मैंने एक बार आपको पॉइंट्स बता दिए, उसके बाद तो आपने पढ़ाना है नेपाल में, मैंने तो यही बोला। जी 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 जी, मैं उसी पॉइंट का समर्थन करते हुए कहते हैं हम आज के लिए गुड नाइट, सी ओके यू, सी यू, बाय बाय। ओके थैंक यू, बाय।